Alright, let's see the example जो हमने पहले कर ली. We all know what this number is, which is the sum of the first n integers. Let's try doing it with induction. Okay. So when I'm not sure कि मैंने यहाँ पे इसका solution लिखा हुआ है. Have I? So we'll prove it for. So basis step would be when n is equal to 1. Okay. And this would be. Let me show you. Yeah, base case or basis step is that its statement is true for 1. Okay, so this is the proof of that statement is true for n is equal to 1. So when n is 1, you have only one number in the list. है ना? Yes? Okay. And n is 1, so it's 1 times 2 over 2, which is 1. Okay. So it's clear. 1 is equal to 1. Base case is done. Inductive hypothesis says this statement must be true for some arbitrary k. I'm gonna just stop using this thing. Okay. So this is the basis hypothesis. Okay. You just write the statement for k. Okay. And now you have to prove something, which is p of k plus 1 is equal to the statement for k is equal to 1. Okay. यहाँ पे p of k is saying that it's a statement where n is equal to k. Okay. And here's what we need to prove. Okay. We need to show that p of k plus 1 is equal to k plus 1 over k plus 2 over 2. Essentially this thing. Okay. Yeah. Just read through this and let me know if you have any complaints. Can everyone see the board? या भी problem हो रहा है? Can everyone see the board? People who cannot see the board. You can see the board? Can you see the whiteboard? Okay. I'm going to try it here. Okay. क्योंकि थोड़ी सी typos हैं slide के ऊपर. Okay. So I'm going to kind of do it here. So base case or basis step is when n is equal to 1. Okay. The sum of I goes from 1 to 1. It's just 1. Is equal to 1 into 2 over 2, which is 1. Okay. So this is the base case or basis step. Okay. Inductive hypothesis says that for arbitrary n is equal to k, I goes from 1 to k, I is equal to, अब जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने k put करना है. Okay. So k into k plus 1 over 2 is this. Okay. So this is my assumption. Okay. The last thing, which is inductive step, is we want to show, okay, that I is equal to 1 to k plus 1 is equal to k plus 1 into k plus 2 over 2. Okay. So जो आपकी original statement थी जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने k plus 1 लिखा है. Okay. This is what we want to show. Okay. We want to show that this sum is equal to this. Okay. And this is what we can assume. This is our P, this is our Q, and we need to show that P then Q is true. Alright? Okay, how do we do this? Yeah. Oh, good. Okay, absolutely. So we know this to be true. If we add k plus 1 on this side, we will get this left hand side. Okay. All we need to show is this thing plus k plus 1 is this thing. Okay. So so add k plus 1 to premise equation. So I would get this thing. Let me call this star is equal to k into k plus 1 over 2
प्लस k प्लस 1. ओके, k प्लस 1 इसमें से अगर कॉमन ले लें तो आई वुड गेट k प्लस 1 into k plus 2 over 2, and this is what we wanted. Okay, and this is the conclusion that we were looking for. Okay, can you see this? Yeah. So inductive step में जो हमने original statement प्रूफ करनी है उसके अंदर n को हम k प्लस 1 से रिप्लेस करना है. वो आपने कहा था कि हमने अज्यूम करना है कि कोई भी आर्बिट्रेरी की है. Yes. हमने कर लिया सब. Yes. So जो इंडक्टिव स्टेप है ना वो ये कहता है कि assuming that the statement is true for k, you prove that it's true for k plus 1. तो डिफरेंट है कि हाइपोथेसिस में आर्बिट्रेरी लेना और इंडक्टिव आर्बिट्रेरी लेना है, लेकिन ये k और ये वाला k सेम है. Okay, so inductive step ये कहता है कि if you can go to the kth step, you can go to the k plus 1 step. Okay, so we assume that we can go to the kth step, and we prove that we can go to k plus 1 step. Okay? No, हमने ये prove करना है. अगर हम k कर सकते तो k plus 1. Yes, हमने ये नहीं prove करना कि हम k कर सकते हैं. Okay, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने assume करना है. ओके, हमने ये अस्यूम करने के बाद प्रूव करना है कि हम k प्लस 1 कर सकते हैं. ओके, जो आपने अभी कहा ना, दैट्स आई थिंक क्रक्स कि अगर हम k कर सकते हैं तो हम k प्लस 1 भी कर सकते हैं. क्या एडिंग k प्लस 1 टू प्रीमाइस कर सकते हैं. सो बेसिकली अब हमने इसको प्रूव करना है. अब इसको प्रूव कर आपने कैसे करना है वो आपकी इंजीनियरिटी है, वो आप इसके ऊपर अब कॉन्ट्रापासिव लगाएं, वट एवर यू नीड टू डू. ओके, ये आपने बेसिकली प्रूव करना है. लॉजिकल रूल्स वो सारे के सारे अप्लाई होंगे. ठीक है, इस स्टेप के बाद सब कुछ वही होगा जो पहले आप करते रहे. ओके, बट जब आप इंडक्शन करते हैं ना तो उसका इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ करना होता है किसी तरीके से ना. वो नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे ना. तो समहाउ आपने यहाँ से कहीं से स्टार्ट होना है. ओके, या यहाँ से स्टार्ट होना है और कहीं पे प्लग इन कर देनी है वैल्यू. we'll see a couple of examples. अभी इस केस में हम we started with this and we proved this. Okay, this was our goal, है ना.